डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में टोपोलॉजी के आपको हाफ ऑफ स्पेस और कॉम्पैक्ट सेट के बारे में बताया था और कॉम्पैक्ट स्पेस के बारे में बताया था, राइट। हाफ ऑफ स्पेस मैंने आपको बताया था जिसमें किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की नाइबरहुड डिस्टेंस हाफ ऑफ स्पेस कहलाता है। और प्रूफ कराया था कि जो हमारा कॉम्पैक्ट सेट ऑफ ए हाफ ऑफ स्पेस होता है वो हमेशा क्लोज्ड होता है। इस पर दो तीन बातें रिमार्क के तौर पर लिख लीजिए, थोड़ा सा इलस्ट्रेट करने के लिए। किसी किसी बुक में थ्योरम, किसी में एग्जांपल के तौर पर है। रिमार्क में नंबर 1 है, हर फाइनाइट स्पेस हमेशा कॉम्पैक्ट होता है। एवरी फाइनाइट स्पेस is a compact space. Is a compact space. जैसे फॉर एग्जाम्पल X हमारा एक स्पेस है जिसमें 3 एलिमेंट हैं A B C। तो ये कैसा है? फाइनाइट है। कैसा स्पेस है? फाइनाइट स्पेस है। तो ये कैसा है? कॉम्पैक्ट है। is a finite space and show compact and show compact and show compact। Number 2, देखिए एक एग्जांपल आपको देना है। गिविंग एन एग्जांपल of a compact space giving an example of a compact space which is not Hausdorff, which is not Hausdorff space, which is not Hausdorff space। देखिए सपोज करिए लेट x इज इक्वल टू ABC में 3 एलिमेंट है और इसके ऊपर एक टोपोलॉजी तो डिफाइन है एम्प्टी स्पेस फाई और स्पेस से सिंगलटन एलिमेंट A AB। क्यों AB और A का इंटरसेक्शन A यूनियन AB वो x AB है ही, ठीक है। इज ए टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन x and tau is a topology defined on X। And tau is a topology defined on X। Here X is only thing finite means finite space, so it is compact space। Here X is a finite space X is a finite space here X is a finite space, so it is compact। So it is compact।
So it is compact. Also, A and B also A and B are two distinct points of X, are two distinct points of X are two distinct points of X whose neighborhood is topologic according A की सिंगलटन सेट A एंड इसकी A भी कह सकते हैं are not distinct, are not distinct. So it is not Hausdorff space. So it is not Hausdorff space. Hausdorff space. It is not Hausdorff space. Okay, it should be. It is not Hausdorff space. ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें थ्योरम लिखे टू प्रूव क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट आर कॉम्पैक्ट. टू प्रूव closed subset of a compact subset is always compact. Is always compact. Is always compact. Okay. Consider a topological space X. Consider a topological space X. And Y is a subset of X, and Y is a compact, most clearly, is a compact subset of X. Subset of X. Also let F is a subset of Y which is closed with respect to X. Also let F is a closed subset of Y F बल्कि ऐसे लिखिए. Also if F is a subset of X, subset of Y, sorry, which is closed with respect to X.
which is closed with respect to x. Which is closed with respect to x. देखिए राइट also let also here y which is subset of x and y is compact and y is compact, then show collection C जो कि g lambda belongs to arbitrary such that yes D कह लीजिए union of g lambda I या g lambda लिखिए अभी तो lambda belongs to arbitrary union x minus f union x minus f make open cover for I. Make open cover for I. Open cover for I. Make open cover for I. Also y is compact. Y is compact. Show sub collection of D, say D days. Show sub collection D days of the finite sub collection D days of the covered by and show cover to yes f and show cover to f. रीजन क्या है f को कवर करने का क्योंकि f सबसेट है y का. Also if this sub collection has any element of x minus f रिमूव कर दीजिए इसे वो तब भी f को कवर करेगा क्योंकि वो x minus f में से है. Also if this sub collection also if this sub collection has any member of x minus f has any member of x minus f then remove it then remove it and resultant subtraction क्योंकि वो x minus f का सदस्य है तो f के subtraction को तो प्रभावित करेगा ही नहीं. Then remove it and resulting subtraction also cover to f. Also cover to f. So every
closed subset of a compact set is always compact. So F is compact. और F कैसा है? क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट है, तो ये भी कैसा होगा? कॉम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट थ्योरम 2 देखिए। नेक्स्ट थ्योरम 2 लिखिए। A space X is compact. A space X is compact. Double if, यानी if and only if every basic open cover of X has a finite subcover. Every open cover of X has a finite subcover. Of X has a finite subcover. Has a finite subcover. Okay. Every basic open cover of basic open cover of X has a finite subcover. Okay. Basic कहते हैं छोटे से छोटा, ठीक है, प्रूव नहीं। Condition is necessary. Condition is necessary. Here we assume that X is compact. Here we assume that X is compact. So every open cover of X has a finite subcover. So every open cover of X has a finite subcover. Has a finite subcover. Has a finite subcover. Also, basic open cover is also a open cover of X, so it is also has finite subcover. In fact, basic open cover is also an open cover. Basic open cover is also an open cover, so it has a finite subcover. So it has a finite subcover. So it has a finite subcover. Okay. Condition is sufficient. Condition is sufficient. Here we assume that every basic open cover for X has a finite subcover.
here we assume that every basic open cover of X has a finite subcover. Finite subcover. We wish to prove that X is compact. इसके लिए हमने माना for this set collection C G lambda belong to arbitrary each open cover for X. I.e. X is equal to union of G lambda belongs to arbitrary. Okay, one can say also let C dash के लीजिए this is B alpha belongs to delta. Each basic open cover for X is any basic open cover for X. Then G lambda निश्चित रूप से आर्बिट्रेरी यूनियन B अल्फाज के बराबर होगा, जबकि अल्फा बिलोंग्स टू कितना डेल्टा, राइट. आल्सो बेसिक ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सबकवर. Has a finite subcover so X can be written in form of union of B alpha i's as I 1 से लगाकर n तक फाइनाइट सबकवर. ओके, एंड आल्सो इसे आप सेकंड के लीजिए G लैम्डा को सम ऑफ द बी अल्फाज के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि वो बेसिक है, मींस छोटे से छोटे ओपन है. इसे आप थर्ड कर लीजिए. एंड बाय द सेकंड वी कैन से and because each B alpha I is subset of G lambda i's, so the G lambda i's is the any arbitrary union of B alpha i's. So by third X can be written in form of union of कितना G lambda i's as I 1 2 3 से n तक, यानी every open cover of X has a finite subcover. So X is compact. I.e. every open cover for X has a finite subcover.
हैज ए फाइनाइट सब कवर and show X is compact and so X is compact. Okay, it should be. Show any topological space X is compact if and only if every basic open cover of X has a finite subcover. Okay, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, उसे लिखिए जरा, हेडिंग डालिए FIP या फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी या FIP, शॉर्ट में से कहते हैं FIP। ओके, ठीक है, a space X is said to be with FIP a space X is said to be FIP is said to be FIP if finite intersection of sub collection of subsets of a family of set in X is non-empty. ध्यान दीजिए, फाइनाइट ये सब कलेक्शन है, फाइनाइट सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन, पूरे का नहीं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए, if G lambda belongs to arbitrary is the collection of subsets of X is the collection of subset of X is the collection of subset of X, then कोई भी आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन ले लीजिए इसका फाइनाइट I1 से गिनती का कुछ भी n ले लीजिए, is not empty. Understand? Okay, this should be has non-empty intersection. ओके, दिस काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 5p, इस पर 2-3 थ्योरम बनते हैं, कर लेंगे इसमें।